Nupur Sharma speech and uh, this type of. Then after that, 29th of June, all internet is banned in Oh, Rajasthan, all the states, and Rajasthan states. So I'm also facing a little more, more and more problem during the internet not working in our phone in our office also. That just I have came in office, then on the network, office network, then I have connected and joined the class. no, okay. That's so. Is it cut in the entire Rajasthan? All Rajasthan. Only working is optical fiber net, only for offices, but he is also working too much slow. Only you can uh, mail some, only you can mailing office purposes you can use, but not more and more. You cannot send the heavy files, you cannot send the anything um, heavy data to anyone. Oh, and then the phone internet, that also. For the internet is totally van, man. Oh my God. That's really sad because I heard her speech, and then I actually, so like, even the Muslim community was saying things about, Hindu religion, and Yes, yes, my understanding is that she never said anything wrong. She was just stating the facts, you yes, know. yes. She's only saying their fact. Actually, she is all. I always support Nupur Sharma's speech. So actually, in Muslim communities also say many types of wrong way in our Hinduism, but no any Hinduism do the murders in the Muslim communities. But then Nupur Sharma's speech, many of countries, Muslim countries, oppose her speech. This is wrong. And also, tomorrow also, uh, yesterday also, the court is also say that this type of activities after the speech of Nupur Sharma. Yeah, that's just sad. And I think, and I read in the news that I don't know which city, Udaipur. I think in Udaipur, Yes, Udaipur. a pregnant woman was killed because her name was Nupur. She was raped and she was killed. So that also happened in Udaipur. I think it's 3 or 4 days ago. The same thing happened, and then there is another. I was just Mm. reading the news before our meeting, and then there was also something. There was a chemist who was supporting Nupur Sharma, and he was also murdered just yesterday or 2 days ago. Actually, So it just, actually, first of all, we are working in Rajasthan. So in Rajasthan, is not too far to Pakistan border. All Muslim communities, some is converted, some is he's from came from the Pakistan during the partitions of India. So he's yeah, always support the Pakistan peoples, and he is also not educated in Muslim communities. that's the And biggest also, problem. yeah, this is the biggest point. Yeah. So yeah, I think if only people get educated and people start just having an open mind to things, and just also accepting and respecting every culture. I think that's Yes, what we need. I mean, even in United States, I mean, I am a foreigner in United States, right? But yes, yes, I have never met anybody who would say, anything bad to me just because I'm not an American. Or, people in United States, it's not even about religion here, it's more about, but racism is everywhere. If you would have yes. Religions heard is about everywhere. everywhere, yeah, I mean, with the whole Black Lives Matter movement, it was a big thing. So
I think it's just sad, but I didn't know that it's, they're actually, uh, they're actually punishing Rajasthan for this. But I'm pretty Mm. sure Modi will do something. I have faith in him. Yes, yes, yes. I have a faith, blind faith. Modi will do something against this happened. And also you can speech about the Rahul Gandhi, say something. He sees the children, this type of police, don't do this type of message he is telling that. Uh, so Rahul Gandhi is totally supposed to these cases. Yeah, that's just sad. So so I am join late this type of activities. Maybe Monday onwards, Monday internet services on. Yeah, okay. Are they saying that? Yes. Did they tell you when it'll be back? Sorry, what do you mean? What you? Will they did they tell you when the internet will be back? Yes, I have received the message on government side. Oh, okay. Mm. Okay. Actually, I am doing in constructions job in Indo-Pakistan border. Our company is making the road for Indian Army Okay. constructions. Oh, okay. So I have know very well about the situations in Rajasthan. Actually, I have touched in government sites always, Indian Army, in administrative head of our locations, all government Mhm. sectors. So I know little bit about the what happening is going on in Rajasthan, and I Yeah, have a and I am established in Jaisalmer location. So actually, our constructions near to Pakistan border, all constructions, like in India border from Pakistan, only 2.5 kilometers. I have constructed over there. I see. Okay. Yeah. Kushi, what do you think about everything that's happening? Are you following it? What about you, Pankaj? Sorry, ma'am, I am late joining, so Uh, I'm we not understanding. we're just talking about what happened in Rajasthan and everything that's happening with Nupur Sharma for speaking out against the Muslim community. And Naveen and I, we've just been talking about it and how it's affecting everybody. Sorry, ma'am, I don't know about Oh, no, that topic. that's no problem. Okay, so let's just then jump into some reading. So we'll have paragraphs that like we read last time. I'll just share my screen in a second. So what are the new words you learned in the last session, Naveen? Meteorologist, ma'am, and some also Okay, what does that mean? uh, study of weather. Yes. You can also ask the Aryan ma'am. He's also in that time is joining with us. Okay. Aryan, what did you learn in the last class? Ma'am, ma'am, my father said, ma'am, meteorologist, me- Uh-huh. study of weather, Yes. and what was mm, meteorologist study of weather. Okay, Okay, You that is can a make good word. Yeah, yes, let's do this. How about um let's make a list of the words that we are learning every day, you know?
Kushi, what about you? Did you learn any new words in our last class? Ma'am, you find some words in the paragraph. Yes. Uh, So do you remember any new word you learned? Sorry, ma'am. Okay, so we will start making a list from today because see, because if we are learning new words and we are not revising them, then it's of no use, because we will just forget every word. And so let's start doing that from today. So, okay, let me open some. And latitude, longitude is also, ma'am. I have Yes, correct. That was also another word that we learned, longitude, yes, yes. latitude. You can reach about your destination is longitude and latitude. Yes, a mixture of that gives us our geographical location. Coordinates. So, Coordinate, coordinate. I can say. Very good. Yes. Good job. Your location coordinate, I can say. Actually, we are using the face attendance marks, na? So I have just remember the coordinates Oh, of network coordinates, longitude and latitude. oh, okay. 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 So, Aryan, do you want to go first? Yes, yes. Okay. I am sharing my screen. One second. I will try. Okay. Okay. I have my screen is shared now. So, Aryan, start. You can start from conflict. Conflict had existed between Spain and England since the 50s, 70s. England wanted a share of the wealth that Spain had been taking from the land it had claimed in the Americas. Elizabeth, Queen of England, encouraged her Staunch. staunch admiral of the Navy, Sir Fran- Francis Francis. Prince Drake, to raid Spanish ships and towns, though these raids were on a small scale. Drake achieved dramatic, dramatic successes, adding gold and silver to England treasury and diminishing Spain om- Omnipotence. omnipotent. Religious differences also caused conflict between the two countries, whereas Spain was Roman cat, cat, cat Catholic. Catholic. Most of England had been Protestant. King Philip II of Spain wanted to claim the thr- throne and make England a Cath- Catholic country again to satisfy his amb- Ambition. ambition and also to relate against England theft of his gold and silver. King Philip began to build his fleet of warships, the Aram, Armada, in January 5086. Okay, Philip, wait. Stop. okay, So I want you to read the remaining part, but first observe how I am reading. You're doing a very good job
But when there is a full stop, you need to stop. So now see how I am reading, and then you will start reading from Philip. Okay, I'm starting it from the beginning. Just see how I'm stopping when there is a full stop, how I'm stopping when there is a comma. Okay. Conflict had existed between Spain and England since the 1570s. England wanted a share of the wealth that Spain had been taking from the lands it had claimed in the Americas. Elizabeth I, Queen of England, encouraged her staunch Admiral of the Navy, Sir Francis Drake, to raid Spanish ships and towns. Though these raids were on a small scale, Drake achieved dramatic success, adding gold and silver to England's treasury and diminishing Spain's omnipotence. Religious differences also caused conflict between the two countries. Whereas Spain was Roman Catholic, most of the England had become Protestant. King Philip II of Spain wanted to claim the throne and make England a Catholic country again. To satisfy his ambition and also to retaliate against England's theft of his gold and silver, King Philip began to build his fleet of warships, the Armada, in January 1586. So, did you see how I am taking a pause when there is a full stop? And whether so, like when there is a full stop, try to take a pause for like 2 to 2 seconds, and then when there is a comma, try to just stop for 1 second and follow this. And then Aryan, start reading from Philip. Philip intended his fleet to be indestructible. In addition to building new warships, he marshaled 130 sailing vessels of all types, re- re- restricted more than 19,000 robust soldiers and 8,000 sailors. Although some of his ships lacked guns and other lacked um, Ammunition. ammunition, Philip was convinced that his armament could withstand any battle with England. The material armament set sail from Lisbon, Portugal on May 19, 1588. But bad weather forced it back to port. The voyage resumed on July 22 after the weather became more stable. The Spanish fleet met the smaller, faster, and more Maneuverable. maneuverable English ships in battles of the coast of Plymouth, England, first on July 31 and again on August 2. The two battles left Spain. Vul- Who, ma'am, could you repeat? Vulnerable. Vulnerable, Vu- Say vulnerable, vulnerable. Vulnerable. vulnerable, Yes. having lost several ships and with it, um, um, um Ammunition. ammunition depleted on August 7, while the Armand lays at an anchor on the French side of the
Strait of Dover, England sent 8 burning ships into the midst of the Spanish fleet to set it on fire. Blocked one side, the Spanish ship could only drift away. Their crews, in panic and disorder, before the amount could regroup, the England attacked again on August 8. Although the Spaniards made a valiant effort to fight back, the fleet suffered extensive damage. During the 8 hours of battle, the Armon drifted perilously close to the rock coastline. At the moment when it seemed that the Spanish ship could be driven onto the English shore, the wind shifted and the Armon drifted out into the North Sea. The Spaniards recognized the superiority of the English fleet and returned home defeated. Very Sir, good. Yes, that's it. Very good. I think you're very good at reading, Aryan. So we'll discuss some words on this. So first of all, does anyone know the meaning of conflict? लड़ाई झगड़े करना मैम, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट Correct. टू। So is there anybody who does not know the meaning? Then you can save it, like you can write it down. What else? Well, this was claimed. Okay, do you know what is diminishing? गायब होना. Yes, very good. Uh, let's see. What is ambition? Anybody? like goal, Huh? Ambition? महत्वाकांक्षा, goal. Yes, goal. Correct. Goal, Mahatmakansha. That's correct. So, Naveen and Aryan, if you have learned it just now, you can write it down. So, so that's correctly said. It's Mahatmakansha, goal. What else? Do you know what is ammunition? Ammunition, हथियार type, weapons. Yes, weapons. Yes, yes. Convinced, Naveen. Agreed with. Agreed with. में प्रोत्साहित करना. हाँ, करेक्ट. प्रोत्साहित मतलब थोड़ा प्रोत्साहित मतलब इंस्टिगेट करना होता है. बट क्लोज. अच्छा, डिप्लीटेड. डिप्लीटेड सुना है किसी ने? बताती हूँ कहाँ पे है वर्ड. ये वाला वर्ड डिप्लीटेड. जैसे हमारी पूरी पूरी दुनिया में हर जगह जो कोल है, कोयला जो होता है वो खत्म होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है. जैसे हमारा लैंड डिप्लीट होता जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. वेपन्स खत्म हो ही जा रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. डिप्लीट इसका ये मतलब है कि जो दो बैटल्स हुई उससे क्या हुआ कि स्पेन. अच्छा, वल्नरेबल का मतलब किसी को पता है?
What, ma'am? vulnerable. Young. मैं वो करती हूँ, ये वाला वर्ड vulnerable, ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा वर्ड है. Anyone? वर्ल्ड वो मिक्स नहीं होता, अच्छा पेट में आ जाना किसी। नहीं, तो जैसे vulnerable का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कोई भी म्यूट पे चले जाओ. अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे अगर नवीन आप म्यूट पे चले जाओ प्लीज. ओके, तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई जैसे अभी हम नवीन आज ही बात कर रहे थे, इस टाइम पे नुपुर शर्मा वल्नरेबल है. वल्नरेबल मतलब जैसे हम अगर बीमार हैं, राइट, या अगर अगर मेरा पैर टूटा है तो मैं वल्नरेबल हूँ गिरने के लिए. मतलब जब तुम थोड़े से वीक और तुम्हारे पास प्रोटेक्शन कम होता है, और उस चीज को वल्नरेबल कहते हैं. मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, बट जब तुम किसी को इजीली, जैसे जब किसी का ब्रेकअप होता है या लड़ाई होती है या डिवोर्स होता है, तो उस टाइम पे वो इंसान वल्नरेबल होता है क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है, और वो मतलब मैम जरूरतमंद, आ, जरूरतमंद क्या? जरूरतमंद तो नहीं कहेंगे, वल्नरेबल मतलब आ, हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव कह सकते हैं थोड़ा सा. someone who can be ओके। easily harmed physically, mentally और emotionally. तो ये वर्ड लिख लेते हैं हम लोग. अगर मैं चैट पे लिखूं तो ये तुम लोग नोट्स बना लो. vulnerability. ओके, vulnerable क्या होता है? जब कोई easily hurt हो जाता है या harmed हो जाता है physically, mentally या emotionally. या पावरलेस भी बोल सकते हैं मैम। अब जैसे पावर नुपुर पा, शर्मा पावर में थी, अब वर्डलेस हो गई तो पावरलेस हो गई अब। नहीं, पावरलेस नहीं होते हैं हम, सिर्फ प्रोन होते हैं. मतलब हमारी पावर उतनी ही होती है, बस हम उस टाइम पे कमजोर होते हैं. वल्नरेबल स्टेट मतलब कि तुम एक कमजोर स्टेट में हो, तुमने अपनी पावर लूज नहीं की है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम किसी ना किसी जगह पर लाइक थोड़े से तुम्हारा पावर नहीं है, वो तुमने सही कहा, लेकिन पावर खोना नहीं है. पावर थोड़ी देर के लिए नहीं है, मतलब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन बस वो एक स्टेट होती है वल्नरेबिलिटी. तो नुपुर शर्मा इज वल्नरेबल एट दिस पॉइंट, और ये न्यूज में भी आया है कि उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए बिकॉज उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है. चपेट में आना मैम, चपेट में आना, लाइक हाँ, गोइंग टू बी हर। यस, यस, यस. ओके, सो हु वांट्स टू रीड नेक्स्ट? आई एम। ओके, खुशी, यू कैन स्टार्ट. यस You can मैम। start from the victory. The victory of the small Greek democracy of खुशी, आपकी आवाज कट रही है. Athens over the yes ma'am, I can start. Yeah, start again.
Ma'am, Yes, Kushi, your voice is breaking up, but try to start reading again. Okay. Maybe Naveen, you can read this one, and then once Kushi has her network issue figured out, she can read the next one. yes, Yeah, ma'am. we are also facing network issue here. So I try my best. Okay. Um, Kushi, can you? I Can I, ma'am? can Okay, sure. So, Kushi, can start you try to drop and join back again? from the victory. Okay, your network is better. Okay, so let her go first then. Kushi, you can start. Am I audible? No, you're cutting off. Sorry. Can I, ma'am? Yes, okay, Nirdosh, you can go. Okay. The victory of the small Greek democracy of Athens over the mighty Persian Empire in 490 BC is one of the most famous events in history. Darius, king of the Persian Empire, was furious because Athens had increased, in, Interceded. interested interested Interceded. for the other Greek city states of the revolt against Persian domination. In anger, the king sent an enormous army to defeat Athens. He thought it would take drastic steps to pacify, Pacify. pacify the pacify the rebellious part of the empire. Persian was ruled by one man. In Athens, however, all citizens helped to rule. Ennobled by this uh, participations, Athens were prepared to die for their city state. Persian, this was the secret of the remarkable victory at Marathon, which freed them from Persian rule. When there was a marathon, the Persians tried to fool some Greek city-state by claiming to have come in peace. The freaked, fright, frightened, the frightened city of Delos refused to believe this, not wanting to await the conquest of Greek. They fled from their city and did not return until the Persian had left. They were wise. They from the Persian next conquered the city of Etria and captured its people. Tiny Athens stood alone against Persians. The Athens people went to their uh, sanct- sanctuaries where they prayed to believe.
devel- delivered. They asked their goods to expand their victory. The Athens uh, re- refurbished their weapons and moved to the plain of Marathon, where their little band would meet two Persians. At the last moment, soldiers from Platea reinforced the Athens troops. The Athens army attacked and Greek citizens fought bravely. The power of the mighty Persian was of, offers by the love that the Athens had for their city. Athens defeated the Persian in Arsil and had combat. Greek soldiers seized Persian ships and burned them, and the Persians in error. Can you scroll up, ma'am? Can you scroll up the sheet, ma'am? Am I Herodotus. audible? Hello. Yes. Can you scroll up the sheet? I have done so. Oh, you completed the. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. So that's it. So Uh, you are reading well. Just the same feedback for you. When there is a full stop, try to take a pause. The only difference between English, one of the most important things with English is the one thing is that your pronunciation has to be correct. So your pronunciation has been pretty good. I would say that you made some small mistakes, and we'll talk about that. But the only thing is that you need to stop, take a pause, because this is English. That's how it works. So just observe how I read the first two paragraphs, and then we will talk about some of the words and some of the pronunciations that were not right. Okay. So I'll just read the first two paragraphs. The okay, the ma'am. victory the victory of the small Greek democracy of Athens over the mighty Persian Empire in 490 BC is one of the most famous events in history. Darius, king of Persian Empire, was furious because Athens had interceded for the other Greek city states in revolt against Persian domination. In anger, the king sent an enormous army to defeat Athens. He thought it would take drastic steps to pacify the rebellious part of the empire. Persia was ruled by one man. In Athens, however, all citizens helped to rule. Ennobled by this participation, Athenians were prepared to die for their city state. Perhaps this was the secret of the remarkable victory at Marathon, which freed them from Persian rule. On their way to Marathon, the Persians decided to fool some Greek city states by claiming to have come in peace. The frightened citizens of Delos refused to believe this. Not wanting to abet the conquest of Greece, they fled from their city and did not return until the Persians had left. They were wise, for the Persians next conquered the city of Etria and captured its people. Tiny Athens stood alone against Persia. The Athenian people went to their sanctuaries. There they prayed for deliverance. They asked their gods to expedite their victory. The Athenians refurbished their weapons and moved to the plain of Marathon.
where their little band would meet the Persians. At the last moment, soldiers from Plataea reinforced the Athenian troops. The Athenian army attacked, and Greek citizens fought bravely. The power of mighty Persians was offset by the love that the Athenians had for their city. Athenians defeated the Persians in archery and hand combat. Greek soldiers seized Persian ships and burned them, and the Persians fled in terror. Herodotus, a famous historian, reports that 6,400 Persians died, compared with only 192 Athenians. So, did you see how I was taking a pause, then starting? Did you notice that? Yes, ma'am. So, see, whenever you're reading, so let's say if I'm reading this part, okay, or maybe let's start from this part, okay. So how I read it is, and when you practice it, because when you practice it and when you speak it, by taking pause, that makes more sense. And when you will speak English like fluently, you will just see that how much it matters for you to like take a pause, speak, take a pause. So how I read this is usually like the victory of small Greek democracy of Athens over the mighty Persian Empire in 499 BC. I see a full stop in my mind. I say 1 2, and then like this one is not a full stop, but like this one is a full stop. So like as soon as I come is one of the most famous events in history. 1 2, Darius one, king of the Persian Empire, one, was furious. So like 1 and 2 is like, just it's not a big thing, but just when you're reading, the other person who's listening to you is more interested, because there is a full stop for a reason, there is a comma for a reason. So other than that, you did a pretty good job. You pronounced most of the words correctly. So let's talk about this word furious. Does anybody know what this means? Furious means excited, ma'am. No. Angry. Yes. Furious means when you're very angry, extremely angry. So like, so Yes. when you say furious, Furious, furious. So when you say, so like, let's say that someone is caught cheating in a test. Furious. The teacher is furious. The teacher is very angry. So that is when you use, instead of very angry, you use furious. Okay. And does anyone know what is the meaning of curious? Curious. Jigyasa. Jigyasa. Yes, jigyasa. Correct. So, okay, interceded. Anyone? When you interrupt someone. So let's say, Disturb. huh? Disturb, ma'am. No. So like when you intercede someone, you intervene. You interrupt. Do you know what is the meaning of interrupt? So see, when there is, so let's say when we are in a court, right, and there are two parties who are fighting for something. So the lawyer intervenes between two parties, or the lawyer intercedes. That means they're trying to intervene. And They're trying to just be in the middle of this thing. So either it's intervene, intercede, and let me put the definition here. So at the end of the call, uh, someone, we can just share this in an email. Pankaj, can we do this? Can you do this, since you are managing the
email for everyone. Like at the end of the call, let's just send this the words that I'm writing for everyone to learn these words and revise every day. Okay, next word, rebellious. Anyone? Against. You are close, but against what? Ma'am, against the Have Greek you cities. So like, have you ever heard like mothers complaining कि मेरा बच्चा तो बहुत शैतान है या मेरा बच्चा किसी का नहीं सुनता है, सुनता नहीं है किसी की, तो वो रिबेलियस बच्चे होते Complain. हैं. सो रिबेलियस मतलब कि रेजिस्ट करते हैं वो हर चीज को, कि मम्मी कह रही खाना खा लो, मेरे को नहीं खाना है खाना, वही बोल रही है पढ़ाई कर लो, नहीं मैं तो अभी खेलूंगा जा करके. वैसे रिबेलियस बच्चे होते हैं कि अपने रिबेल, रिबेल वर्ड से याद करो, रिबेलियस. तो रिबेल मतलब क्या होता है कि हर चीज को, हर चीज के Get अगेंस्ट मना करना, जो हमें नहीं बनना चाहिए कभी. राइट, हमेशा ऑपोजिट उसमें बोलना. अगर मैं बोल रही हूँ दिन है, तो जो रिबेलियस होगा वो बोलेगा नहीं ये रात है. रिबेल मैं मतलब किसी चीज को मतलब किसी चीज में हाँ मिलाना ही नहीं है, हर चीज को रिबेल करना है, वो होता है रिबेल. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, ही थॉट इट वुड टेक ड्रास्टिक स्टेप्स टू पैसिफाई द रिबेलियस पार्ट ऑफ द एम्पायर. मतलब कि रिबेलियस मतलब कि, अच्छा उससे पहले पैसिफाई का मतलब किसी को पता है? पैसिफाई मतलब शांत करना. पैसिफाई मतलब, तो इस लाइन में ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये लोग हैं पर एथेनियंस, ये बोल रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक मतलब कि बहुत, हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो रिबेलियस एम्पायर है उसको शांत करने के लिए. ठीक है. तो जब कोई रिबेलियस बच्चा होता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको पैसिफाई करती हैं, उसको शांत करती हैं. तो वो है रिबेलियस और पैसिफाई, ये दो वर्ड्स एक साथ आते हैं, तो इनको ऐसे याद रखो कि जो रिबेलियस लोग होते हैं उनको हम शांत करते हैं, विच इज पैसिफाई. उसके बाद क्लेमिंग का मतलब तो पता होगा. हम अपना लैंड क्लेमिंग. वैसे Complain. Complain. नहीं, मैम लेना. क्लेम करना मतलब कि हाँ, मतलब कि जैसे कि जैसे जैसे आर्यन, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पे लैंड कर रखा है, तुम्हारे नाम पे जमीन खरीद रखी है, लेकिन जब तुम 18 साल के हो तभी तुम उसको क्लेम कर सकते हो. तो इसका मतलब है क्लेम करना मतलब उसको जा करके लेना, उसको जा करके बोलना कि ये मेरा है, मतलब बोला नहीं, मतलब बस ले लेना उस चीज को, क्लेम करना कि ये मेरा है, वो चीज है. उसके बाद कॉन्कर्ड, ये वर्ड बहुत यूज होता है हिस्ट्री में. जीतना, विन करना. यस, कॉन्कर्ड मतलब जीत गए हम लोग, कॉन्कर कर लिया, उनको पकड़ लिया या कब्जा कर लिया. अच्छा, एक्सपेडाइट, इसका मतलब जल्द से जल्द एक्सपर्टाइट द जल्दी से जल्दी. यस. तो जैसे कि हम खाना ऑर्डर करते हैं किसी स्विगी या उस पे, और नवीन म्यूट पे चले जाना. तो हम जब एक्सपेडाइट करते हैं कोई चीज, तो जैसे कि हमने स्विगी पे खाना ऑर्डर किया और हमें बोल रहे हैं कि 45 मिनट्स लगेंगे खाना आने में, तो हम उनको बोलते हैं भैया प्लीज जल्दी ले आना और जल्दी कर देना. सो उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सपेडाइटेड. कैन यू प्लीज एक्सपेडाइट इट, ताकि लाइक कैन यू एक्सपेडाइट इट एंड आई कैन गेट द फूड इन 20 मिनट्स. सो वो होता है एक्सपेडाइट. गुड. फिर अच्छा, आई थिंक इतने ही वर्ड्स हैं, तो ये सारे वर्ड्स मैम डेमोक्रेसी वी हैव लेफ्ट मैम maybe.
अच्छा, डेम कहाँ पे है? मैम, top in top democracy there डेमोक्रेसी was. मतलब पता है किसी Yes, को? yes ma'am, where the people choose their leaders. Yes. Is India a democratic country? Yes. Good. Yes, correct. Okay, Mm, so और कोई words, Aryan? I और think so. uh, so one second. So निर्दोष एक word आप Athenians, ये word है Athenians, ये आप गलत बोल रहे थे एक word. और Persians, refurbished, ये कुछ words थे, आपने note ले लिया है जब मैंने पढ़ लिया था तो? Yes, ma'am. Okay. Okay, so Khushi, you can read the next one here. यहाँ से. The Trojan War is one of the most famous wars in the history. It is well known for the 10 years duration, for the heroism of the number of legendary characters, and for the Trojan horse. What may not be familiar, however, is the story of how the war began. According to Greek myth, the strife between the Trojans and the Greeks started at the wedding to Peleus, king of Thessaly, and Theseus, a sea nymph. All the gods and goddesses had been invited to wedding celebration of Troy, except Eris, goddess of discord. She had been omitted from the guest list because her presence always embroiled mortals and immortals alike in conflict. To take revenge on the on those who had slighted her, Iris decided to cause a skirmish into the middle of the banquet hall. She threw a golden apple marked for the most beautiful. All of the goddesses began to haggle over who should possess it. The god and goddess reached a stalemate when the choice was narrowed to Hera, Athena, and Aphrodite. Some time was needed to settle the controversy by picking a winner. The job eventually fell to Paris, son of Priam of Troy, who was said to be good judge of beauty. Thérèse did not have an easy job. Each goddess, eager to win the golden apple, tried aggressively to bribe him. I shall grant you vast kingdom to rule, promised Hera. Vast kingdom are nothing in comparison with my gift, contradicted Athena. Choose me, and I shall see that you win victory and fame in war. Aphrodite outdid her advisors. However, she won the golden apple by offering Helen, Zeus' daughter and the most beautiful mortal, to Paris. Paris and anxious to claim Helen set off for Sparta in Greece. Although Paris learned that Helen was married, he accepted the hospitality of her husband, King Melanso of
Sparta. Anyway, therefore, Melanus was outranked for a number of reasons when Paris departed, taking Helen and much of the king's wealth back to Troy. Melanthius collected his loyal forces and set sail for Troy to begin the war of reclaim Helen. Excellent, Kushi. You were so conscious about the full stops and everything. Very good. So, since Kushi read it well, I'm not going to read it again. Just some words that I think we can learn from. So, strife. Anyone knows what is a strife? Anybody knows what is a conflict? लड़ाई. कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई. हाँ, so strife is a conflict. ओके. Okay, I'm writing it in the chat. Okay, then wedding. Omitted. Omitted किसी को पता है? भूल जाना. हाँ, भूल जाना, हटा देना, डिलीट कर देना, कुछ लिख करके काट देना, ओमिट कर देना. Embroiled. जब किसी को हम इन्वॉल्व करते हैं किसी लड़ाई में, तो she had been omitted from the guest list because her presence always embroiled mortals and immortals alike in conflict. तो ये कह रहे हैं कि जो ये है, all the gods had been invited except Eris. So जो यहाँ पे एरिस गॉडेस है, उनको छोड़ करके सबको इनवाइट किया गया. और उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? उनका नाम हमने ओमिट कर दिया. यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड. तो इसका इस लाइन का मतलब भी समझते हैं. तो ये लाइन में दो वर्ड्स हैं. कह रहे हैं इट शी हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द गेस्ट लिस्ट, मतलब उसको डिलीट कर दिया गेस्ट लिस्ट से, क्योंकि उनकी प्रेजेंस से क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती थी. वो जब एम्ब्रॉइल्ड हो जाती थी, वो जब जाकर के इन्वॉल्व होती थी, तो तो दैट क्रिएटेड. मॉर्टल्स एंड इमोर्टल्स लड़ाई करते होंगे. यस. सो उससे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स दोनों लड़ने लगते हैं. जैसे ही कि कुछ होते हैं ना कुछ लोग, कि जैसे ही वो बोलते हैं वैसे ही लड़ने लगते हैं. तो इसलिए उन्होंने एरिस को बुलाया ही नहीं कि भाई ये आएगी तो लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए. तो ये दो वर्ड हो गए हैं, एम्ब्रॉइल्ड एंड ओमिटेड. उसके बाद रिवेंज का मतलब किसी को? मैम किसी बदला लेना. यस, बदला लेना. हैगल. मैम अराउंड घूमना. नहीं. हम्म, हैगल जैसे कभी तुमने देखा है, तुम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हो और सब्जी लेते टाइम वो कहते हैं 10 रुपए किलो, और मम्मी कहती है नहीं नहीं ये तो 6 रुपए में मिलनी चाहिए. वो हैगल होता है. बार्गेन करना, हैगल करना. याद रहेगा आर्यन? कल पूछूंगी मैं ये. ओके. हैगल सबसे पूछूंगी जो लोग ज्वाइन. ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स सब लोग पढ़ना अच्छे से, क्योंकि मैं सैटरडे संडे और मंडे मेरी छुट्टी है, तो मैं तीनों दिन अवेलेबल होंगी. तो ये वर्ड्स जो हम सीखेंगे वो हम रोज रिवाइज करेंगे. जैसे हमने आज किया था, आज एक वर्ड हमें बताया था नवीन ने, मीटियोरोलॉजिस्ट. आर्यन ने भी बताया था. वैसे ही हमारे पास आज बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो प्लीज ये सब लिख लेना सब लोग, और फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर से. और कौन से वर्ड हैं यहाँ पे? कंट्रोवर्सी. एनीवन? अपोजिशन, लाइक विरोध टाइप जो है वर्ड. हाँ,
जब डिसएग्रीमेंट होता है, जैसे अभी पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये मीडिया में, न्यूज में जो भी सब चल रहा है वो कंट्रोवर्सी, वि, विवादित बयान या विवाद होना, विवाद। कंट्रोवर्सी। करेक्ट, हाँ। ओके। ओके, फिर क्या है, और कौन सा वर्ड है? अग्रेसिव। गुस्सा से, मैम एग्रेसिव गुस्सा। गुस्सा यस, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अग्रेसिव सिर्फ गुस्सा नहीं होता है। जब लोग अग्रेसिव होते हैं तो वो बिना बात के सामान फेंकते हैं, मारपीट करते हैं, गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, वो सब है अग्रेसिव। बहुत गुस्सा होना। कॉन्ट्राडिक्ट, ये मैं कैसे समझा सकती हूँ? जैसे अभी नुपुर शर्मा ने कुछ शब्द बोले हैं, तो मीडिया क्या कह रही है? कॉन्ट्राडिक्टिंग है ये। द्वंद्व टाइप का, कॉन्ट्राडिक्ट यानी आपस में द्वंद्व है, कॉन्ट्राडिक्ट है, विरोधाभास टाइप। हाँ, मतलब कि हम सच को मना कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट जो है वो किसी चीज के अगेंस्ट, विरोध में बोल रही है। कॉन्ट्राडिक्ट विरोध होता है। ओके, फिर हॉस्पिटैलिटी। सेवा करना। हाँ, हॉस्पिटैलिटी, सेवा करना। ओके, तो और रिक्लेम, क्लेम हमने पढ़ा था, क्लेम, रिक्लेम। फिर से लेना। हाँ, क्लेम, रिक्लेम करना। ओके, अब किसको पढ़ना है नेक्स्ट? 1 से स्टार्ट कर दो। नवीन, पंकज, सुरेंद्र, आप ही लोग बचे हैं। यस। पेजेंट्स,
परफेक्ट, अच्छा पढ़ा आपने. सो okay, so then let's go through some words. uh, Concern. Okay, let's do intriguing. Anyone intriguing? um आर्यन, आपको पता था ना क्यूरियस? तो इंट्रीगिंग मतलब होता है कि जब आप जब आपकी कोई क्यूरियोसिटी, इंट्रीग, जैसे कि आई एम इंट्रीग्ड टू नो अबाउट इंडियन कल्चर, और कि मतलब मेरे को, हाँ Yes. हाँ, तो इंट्रीग्ड, क्यूरियस, जब हमारे अंदर किसी चीज को जानने की वो होती है, इंट्रीग्ड. मैं किसी चीज के लिए इंट्रीग्ड हूँ, मतलब मुझे इस चीज के बारे में और ज्यादा जानना है. इंट्रीग्ड, ये मतलब होता है. अ, समझ आया? Curious is also intrigue. Curious is also na. हाँ, मतलब इंट्रीग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी की क्यूरियोसिटी जगाते हैं, जब किसी की क्यूरियोसिटी जागती है, वो होता है इंट्रीगिंग. मतलब जब आप उकसा, मुझे वर्ड नहीं पता हिंदी में क्या होता है, बट जब आप जानना चाहते हो किसी चीज के बारे में, वो इंट्रीगिंग होता है. हिंदी में मैं देखती हूँ क्या होता है इसका मीनिंग. मैम इच्छुक. हाँ, राइट राइट, ये दोनों वर्ड्स ही सही कह रहे हैं. ओके, तो ये हो गया इंट्रीग्ड. कंसर्न्स. लड़ाई करना. नहीं, चिंता कंसर्न चिंता मतलब कि परेशान चिंता होना. मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए कंसर्न हूँ, जो मैं अपने मम्मी पापा को रोज बोलती हूँ. वो लोग चलते नहीं है, ज्यादा घर पे रहते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपके लिए कंसर्न हूँ, मैं आपकी हेल्थ के लिए कंसर्न हूँ, क्योंकि आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो. वो होता है कंसर्न. रेन. REIGN. जहाँ मैम कैसा वेदर है मैम, ये वेदर. नहीं नहीं, और सोचो. रेन मतलब कि जब किसी का जैसे जब कोई रूल करता है ना, उसको रेन कहते हैं. कि एक टाइम पे ब्रिटिश ने हमारी कंट्री को रेन किया था, पे रूल किया था, वो होता है रेन. शासन, हाँ, शासन काल या शासन काल. शासन, करेक्ट. शासन या शासन. यस यस यस. ड्यूरिंग, मतलब एक ड्यूरिंग हिज रेन, मतलब ड्यूरिंग हिज रेन ओवर रशिया, मतलब उनके शासन के टाइम पे ये हुआ, ये मतलब है. कि वो लोग इवेंट, शासक थे. शासक थे, करेक्ट. यस, वो रेन होता है. RAIN बारिश वाला रेन होता है. REIGN, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, लेकिन ये वाला रेन होता है शासन करना, और वो वाला रेन होता है बारिश. तो इसका ध्यान रखना. उसके बाद रिवोक. किसी भी लॉ को कैंसिल कर देना. यस यस, जब हम किसी चीज की वैलिडिटी को खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, वो चीज होती है रिवोक करना. कि जैसे जब हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, तो जो अभी वाले प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सारी जो जो भी पावर है, वो रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैंसिल. क्लैमर्ड का मतलब, फिर हम लोग ये लाइन देखेंगे. क्लैमर्ड दो. नॉइस. हाँ मैम क्लेमर नॉइस. हाँ, जब जब ना बहुत तेज से आवाजें आती हैं, लाउड, जब हम तेज से शाउट कर रहे हैं लाउडली या कुछ. तो इसमें कह रहे हैं सम वर्कर्स एंड पेजेंट्स हाउएवर क्लैमर्ड फॉर मोर रैपिड सोशल रिफॉर्म. मतलब वो लोग शोर कर रहे थे, जब हम मतलब जब हम किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट होता है,
So all that is clamoring, clamor. चलाओ. जार. सो इसको जब CZAR है, इसको CZAR को जार प्रोनाउंस करते हैं. ये सिर्फ एक टाइप का एक मतलब एक जैसे ना नाम था, एक इन लोग एक पूरे ग्रुप का नाम था, उनको जार बोलते थे. तो सिर्फ ये उस जो जैसे रशियंस है, एक एम्परर का नाम है रशिया का ही, CZAR, जार, एम्परर. सो ये हो गया. एग्जीक्यूटेड, इससे पहले वाउच्ड का मतलब किसी को पता है? वाउच. नहीं. वाउच मतलब कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है. सर्टिफाइड करना, वाउच सर्टिफिकेट, वाउच ऑल मेंबर्स. वाउच मतलब कि जैसे किसी चीज को के लिए मतलब जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और मैं अगर किसी को बोलूँ कि अब जैसे बताऊं अपना कि मेरे हिसाब से ये ऐसा है, या फिर जैसे जैसे किसी का यूएस में क्या होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपको वहीं पे रुकना होता है और आप विटनेस होते हो. तो जो विटनेस कोर्ट में जाके बोलता है ना, वाउच करता है, मतलब कि उस सच्चाई के लिए वो अपने शब्द देना, अपने वर्ड्स देना, वाउच करना. जैसे मतलब कभी कोई भी अपना स्टैंड देना पर वाउच करके, मतलब हम अपनी बात रख रहे हैं सामने, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी. प्रमाणित करना मैम, प्रमाणित, प्रमाणित यस. करना, यस, प्रमाणित करना, करेक्ट. कि सर्टिफिकेशंस देना अब. हाँ, हाँ, वाउच, हाँ, सर्ट कह सकते हैं, सर्टिफिकेशन देना. कि मतलब बस अपने वर्ड्स आगे रखना. तो इसलिए जब हम किसी चीज के लिए वाउच करते हैं, सच बोलना चाहिए हमें वाउच करते टाइम, क्योंकि वो फिर कोर्ट में हो या कहीं पे भी हो, वो होता है वाउच करना. अच्छा, एग्जीक्यूटेड. हम प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, या जैसे अगर तुमने न्यूज में कभी पढ़ा होगा कि कोई प्रिजनर है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है. प्लान एग्जीक्यूट करते हैं मतलब प्लान सक्सेसफुल होता है, बट एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है. तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि although witnesses vouched that all the member of Czar's family had been executed, मतलब खत्म, मार दिया उनको. There were rumors suggesting that Anastasia has survived. अच्छा, किसी को ये पूरी स्टोरी में कुछ समझ आया कि किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, क्या डिस्कस कर रहे हैं? ब्रीफ में एक लाइन दो लाइन में अगर किसी को समझ आया हो तो बताओ. अच्छा, तो इसमें बेसिकली इस पूरी स्टोरी में ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई हुई थी रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे, जो पूरी लड़ाई हुई थी, तो उसमें जार निकोलस जो था वो एम्परर था रशिया का, और एनास्टेशिया जो थी वो उसकी बेटी थी. तो क्या हुआ कि जब रशिया में लड़ाई हुई तो ये जो बोल्शविक्स थे, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, इन्होंने रशिया में आकर के इस एम्परर जार का मर्डर कर दिया. और उन्होंने बोला कि पूरी फैमिली का मर्डर हो गया है, सब मर गए हैं. लेकिन जो विटनेसेस थे, उन्होंने वाउच किया कि नहीं, सब लोग नहीं मरे हैं. र्यूमर्स थे, मतलब लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि नहीं, जो एनास्टेशिया है, जो कि ये जार निकोलस जो एम्परर है उसकी बेटी है, वो जिंदा है. ये हो रहा है. तो उसके बाद बहुत सालों तक बहुत सारी औरतें आई और वो कहती रही कि हम एनास्टेशिया है, हम एनास्टेशिया है, बट वो एनास्टेशिया नहीं थे. उसके बाद इस पूरी स्टोरी में उन्होंने ये बताया कि बहुत साल बाद एनास्टेशिया करके एक बंदी है, वो यूएस पहुंच गई थी. इन्होंने आई थिंक कहीं नीचे ये चीज बता रखी है, ये कि एनास्टेशिया immigrated to US in 1928 and took the name Anna Anderson. She still wished to prove that she was Anastasia, though, and returned to Germany to bring suit against her mother's family. There, she declaimed to the court, asserting she was indeed Anastasia. तो
ये पूरा पार्ट बता रहा है कि ये जो एनेस्थेशिया है, ये यूएस में थी, लेकिन वो जर्मनी वापस आई ये कहने के लिए कि वो जो है वही है असली एनेस्थेशिया, और उसको इनहेरिटेंस मतलब उसके जो पिता का जो भी प्रॉपर्टी, ज्वेल्स, गोल्ड है वो डिजर्व करती है, मतलब उसको मिलना चाहिए क्योंकि वो असली एनेस्थेशिया है। और फिर एंड में क्या कह रहे हैं, द कोर्ट डिसाइडेड दैट ना वो एनेस्थेशिया की आइडेंटिटी कंफर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, लेकिन आज तक लेकिन हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन थी जो ग्रैंड डचेस एनेस्टेशिया। उसकी जो सर्च है वो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है, तो पूरी स्टोरी का मतलब ये है। समझ आ गया सबको? कोई और वर्ड्स इसमें किसी को पूछनी? मैम इसको, इफ यू डोंट माइंड मैम, ये मेल हो सकता है क्या, या ये मिल सकता है पीडीएफ? हाँ, मैं इसको डाउनलोड करके भेज दूंगी। ठीक है, मैं ये भेज देती हूँ। पंकज, मैं आपको भेज दूँ, आप सबको भेज दो, या आई डोंट नो सब लोग मेल में हैं क्या? ठीक है, आई विल सेंड इट टू पंकज एंड देन पंकज विल शेयर इट विद एवरीवन। Okay, so I think we are at time now. Yes. So we will meet again tomorrow. And Pankaj, if you can just drop me a mail in case I forget it. But we will meet again tomorrow. That will be my Sunday, and then Monday also I have a holiday here, so I can join on Monday also. Okay. So then have a great day, everyone, and let's talk tomorrow. And then please come prepared with the words that we have discussed, everyone. Please, that because that is the Yes. most important thing. We all are learning, okay? Everybody, including me, I'm also learning with you guys. So let's try to just go over the words before going to bed at night. Okay? Yes, definitely. Okay, thank you everyone. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank Have a you. nice day.